Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video, we will start a new chapter, that is chapter number 13, the simple past tense. All of you get ready with your grammar book and open page number 66, chapter 13, the simple past tense. Now let's see what is simple past tense. The simple past tense is used to express about things that happened in the past. That means in simple past tense it expresses those things that happened in the past. In simple term we can say that in simple past tense we include those events or incidents that started in the past and finished in the past. That means सिंपल पास्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं या ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो चीज़ें आपकी पास्ट में ही स्टार्ट हुई थी एंड पास्ट में ही फिनिश हो गई. वी यूजली मेक the simple past tense by adding ed to the verb. That means in order to form verb in simple past tense we add ed. That means जो verbs हम यूज़ करते हैं simple past tense में उनमें हम ed ऐड करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं in simple past tense we used verb second form. verb का जो second form होता है उसे हम यूज़ करते हैं. This tense is used first to indicate an action completed in the past. That means सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं, ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके एक्शंस पास्ट में ही कंप्लीट हो गए. सेकेंड, टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स, एंड ये आपकी ऐसी हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो आप पहले पास्ट में करते थे बट अभी आप प्रेजेंट में उनको नहीं करते हो. सो सिंपल पास्ट टेंस में उन सारे इवेंट और सारे इंसिडेंट के बारे में बात होती है या एक्शंस के बारे में बात होती है जो कि आपके पास्ट में ही स्टार्ट हुए थे एंड पास्ट में ही फिनिश हो गए. उनका प्रेजेंट से कोई भी मतलब नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ओपनड द डोर. दैट मीन्स आई ओपनड द डोर कि मैंने डोर ओपन किया था. ओपनड, सो यू कैन सी ओपन में हमने ed ऐड किया. सो वी हैव यूज्ड वर्ब सेकेंड फॉर्म. The plane landed a few minutes ago. That means जो प्लेन थी वो लैंड हो गई है कुछ मिनट्स पहले. That means जो आपका एक्शन था, जो आपका इवेंट था वो पहले ही हो गया है. Now see the first point. We generally form the simple past tense by adding ed to the verb. That means जब हम simple past tense में बात करते हैं then जो verb उनमें form होता है उनमें हम ed add करते हैं. For example, jump plus ed then it will become jumped. Lift plus ed lifted. Laugh plus ed laughed. Look plus ed looked. So we can see that in these all verbs we have used ed. We have added ed with the base form of the verb. जो root form होता है verb का उनके साथ आपने ed add किया है. Now let's see the second point. If a verb ends in e, just add d to make the simple present tense. That means ऐसे verb जिनके last letter e होते हैं उस केस में आप क्या करोगे. फॉर एग्जाम्पल, स्माइल. स्माइल का जो लास्ट वर्ड है वो लास्ट लेटर क्या है, ई है. सो ई के साथ आप डी ऐड करेंगे. सो इट विल बिकम स्माइल. सो स्माइल क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. सो सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी स्माइल व्हेन शी सॉ मी. जब उसने मुझे देखा देन उसने मुझे देख के स्माइल किया. We race against each other on our bicycles. Third point, if a verb ends in y, change the y to I and add ed to make simple past tense. That means ऐसे verb जो लास्ट में उनके जो लेटर होते हैं वो y होते हैं उस केस में आप क्या करोगे, y will change to I. y को आपको चेंज करना है I से and then you have to add ed. फॉर एग्जाम्पल, कैरी. कैरी की स्पेलिंग क्या होती है, CARRY. सो द लास्ट लेटर इज वाई. सो वाई विल चेंज टू आई एंड देन यू हैव टू ऐड ed. सो इट विल
become carried. Okay, so now the carried is in the verb second form, and in simple past tense we use verb second form. जब आप सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंसेस को बनाते हैं देन जो वर्ब आप यूज़ करते हैं वो सेकेंड फॉर्म में यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आप वर्ब को चेंज करते हो सिंपल पास्ट टेंस में बनाने के लिए देन कभी आपको डी ऐड करना होता है, कभी आपको ईडी ऐड करना होता है. सो यू शुड नो हाउ टू चेंज. आपको आना चाहिए कि कैसे चेंज होता है वर्ब सेकेंड फॉर्म में. Now let's see the example. I carried my sister's shopping bag. Fourth point, with some short verbs which end in a consonant, double the consonant before add ed. That means in this, when the verb end with consonant letter, in that case you have to double the consonant. जो लास्ट में जो आपका consonant होगा उसे आपको डबल करना है and then you have to add ed. For example, the stranger grabbed my arm. So जो verb का first form था वो आपका grab था, GRAB. So लास्ट का लेटर है आपका B. B आपका कॉन्सोनेंट है. सो B को आप डबल करोगे. डबल मीन्स यू विल राइट 2 टाइम्स. सो इट विल बिकम GRABB and then you have to add ED. So it will become grabbed. Father slammed the door. So now the first form of the verb is slam. Base form है verb का slam. So last letter is M. M is your consonant. So you will double M. डबल करेंगे आप m को, 2 बार m को लिखेंगे and then you will add ed. So it will become slammed. Slammed means to shut. Okay, बंद करना. Now the simple past tense of the most verbs ends in ed. That means in simple past tense most of the verb end with ed. Simple past tense में जो verbs होते हैं वो mostly end होते हैं ed से. These verbs are regular verbs. So you can say that those verbs which end with ed, they are the regular verbs. For example, base form and the simple past. Bake, baked. That means here base form is bake. Base form you can say, or you can say root form. So bake will change to baked. Open, opened. Pull, pulled. Push, pushed. So these all are example of regular verbs. But the simple past form of some verbs that does not end in ed. But there are few verbs in simple past tense that does not end with ed. ऐसे बहुत से verbs होते हैं simple past में जो end नहीं होते हैं ed से, and इन verb को क्या कहते हैं? irregular verbs. दैट मीन्स ऐसे वर्ब्स जो एंड होते हैं ईडी से उनको आप रेगुलर वर्ब्स कहते हो, एंड जो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एंड नहीं होते हैं ईडी से उनको आप इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. एंड इरेगुलर वर्ब्स फॉलो डिफरेंट रूल्स. ओके, नाउ सी द पॉइंट. द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ सम इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट चेंज एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल, बेस फॉर्म सिंपल पास्ट, बीट, बीट. सो नाउ यू कैन सी दैट बेस फॉर्म क्या है? बीट. सिंपल पास्ट भी आपका बीट रहेगा बिकॉज ये आपका रेगुलर वर्ब है. सो रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई चेंजेस होते हैं कभी नहीं होते हैं. एग्जाम्पल, बर्स्ट, बर्स्ट, कट, कट. सो इनका जो सिंपल पास्ट है वो भी सेम होगा. नाउ बेस फॉर्म डू विल चेंज टू डिड इन सिंपल पास्ट, फील, फेल्ट, रन, रैन. सो नाउ these all are example of irregular verbs. So now we have completed this chapter, chapter 13. Your homework for today is to try to do the exercises which are given at the back, exercise A, B and C, which is given on page number 68. So now I will end this class. All of you don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Have a nice day.